As you all know, I'm Goldie from the Cavalier, and today I'm going to discuss a very important और सबसे ज़्यादा fearsome topic of this, चाहे वो student NDA हो, CTS हो, CPF, AFCAT, whatever. The student has the fear of vocabulary, and we are going to learn some words and discuss some questions so that we understand what is the correct strategy to develop our vocabulary. अब vocabulary को हम कैसे याद कर सकते हैं? बहुत सारे ways हैं to learn vocabulary, and vocabulary is a very integral part of the. ऐसा नहीं है कि आप vocabulary को छोड़ के जाओगे तो आपका पेपर क्लियर, because vocabulary पे there are too many questions that are asked in the paper, whether in the form of synonyms or antonyms or idioms and or fill in the blanks or anything. तो अब vocabulary को याद करने के there are billions of ways. Now उसमें से one way is, अब root words बच्चे होता क्या है? Root words को अगर हम बोले तो it is not that it is a prefix or it is a suffix. It is one part of the word which can come anywhere in the word. वो शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, बाद में भी. अब उससे होगा क्या? Now when you know the meaning of the root word, तो root word के through आपको सारे words by heart याद नहीं करने. You will be able to figure out through the method of elimination what is the meaning of the word. You will be able to guess the synonym or the antonym only by knowing the meaning of the root. अब there are various root words, and by the word we are able to figure out what is the word talking about. और अगर हम मान लो word के meaning तक नहीं पहुंच पा रहे अपने elimination, या हमें नहीं भी समझ में आ रहा, बट हमें ये पता है कि ये word is about a happy thing, whereas this word is talking about a bad thing, तो हम उसको eliminate कर सकते हैं. कौन कौन से words negative हैं उनको eliminate कर सकें, कौन कौन से words positive हैं उनको इकट्ठा कर सकें, so that we can get to the nearest answer. तो root words के through vocabulary याद करना is one of the easiest ways to learn vocabulary. तो आज की क्लास में I am only going to discuss about root word. I'll give you certain examples. I'll also move on to some of the PYQs of the question and discuss how do we move across to the answer, how do we learn, and how do we move to the question, and how do we get the answer, whether it is synonym or whether it is antonym. So let us move forward and see कैसे questions आते हैं, कैसे करने हैं हमको root word, and what is the right method, what is the right strategy so that we are able to improve our vocabulary through root word. Now, when I see here, I am talking about here about the root words. Now, when I'm talking about root words, so if you can see here, the first word that is written here is soma. Now, when I'm talking about soma, soma basically means body. Now, you can see I have given certain examples of the root word soma. Now, soma means सबसे पहले the word that has been given is somatotype, which means that since this is body, it obviously means body type. Similarly, when we come to the word somatic, so because soma is body, so it is related to body. If I move across to the next word, which says psychosomatic, psycho का क्या मतलब होता है? Related to our mind, brain, etc. And soma is body. तो आंसर क्या होगा? Physical illness which is mentally induced. Like, for example, if somebody is not feeling well because of depression, anxiety, mental disorder, तो वो हो गया आपका psychosomatic. Next is somatology. Logy का बच्चे word होता है mean study of. तो somatology क्या हो गया? It means study of physiology,
एंड एनाटॉमी ऑफ बॉडी। तो सोमा का मतलब हो गया बॉडी, एंड सोमा से जितने भी रिलेटेड वर्ड्स होंगे आपके, दैट विल ऑल बी रिलेटेड टू योर body. Let us look at the next root word and find out what is the next. Next root word है बच्चे pan. Now pan का मतलब होता है all. तो अगर हम कह रहे हैं pan human, तो it means for all humanity. One word है, so that means I'm talking about all human beings. Pantheism. Now the word theism means that I'm talking about God. I'm talking about religion. So worship of all gods is known as pantheism. I am only giving you some examples with some root words ताकि आपको समझ में आए आप उसको कैसे incorporate करोगे when you are looking at your questions of vocabulary. अगले वर्ड पे जाओ तो पैनोरमा. नाउ पैनोरमा का मतलब क्या होता है कि जब आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलता है, दैट मीन्स एन ऑल राउंड. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? द वर्ड सेज पैनेशिया. पैनेशिया का मतलब है सारी बीमारियों का, सारी प्रॉब्लम्स का एक इलाज. दैट मीन्स दैट वन क्योर फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, फॉर ऑल योर डिजीज. Maybe you talk to your best friend and you are relieved of all your problems, so that is a panacea. You are talking to your mother or your father, so that is a panacea. The next word is pandemic, जो हमने कोविड के टाइम पे बहुत सुना. इसका मतलब है जो सबको इफेक्ट करता है, because we are talking about pan, it is affecting each and every person, so that is pandemic. Let us move on to the next root word and see बच्चे की क्या है. Now the next root word that we have here is poly. Now poly का मतलब होता है when we are talking about the word many. Now polyglot का मतलब क्या हुआ? That means that we are talking about competent in many languages. Polygon तो सबको मालूम है, where a geometrical plane figure जिसके अंदर बहुत सारी lines, 3 or more straight lines. Polynomial जिसमें mathematical expression है with more than 2 terms. Polyandry का मतलब है where I am saying a woman who has more than husband. Remember, it is not polygamy. Polygamy होता है man, and polyandry means woman. Polygamy means a man who has more than one wife, who has many wives, and polyandry means a woman who has more than one husband, who has many husbands. Let us move forward and see what is the next thing that we have here. Bache, third, when I am talking about the word measure. अब ये वर्ड तो बहुत कॉमन वर्ड है. measure का मतलब होता है मेजर करना. अगर आपके पास एमीटर है, इट इज अ डिवाइस व्हिच मेजर करंट. वोल्ट मीटर क्या करेगा? ऑब्वियसली वोल्टेज मेजर. ऑल्टीमीटर क्या करेगा? ऑल्टीट्यूड, हाइट मेजर करेगा. पेडोमीटर का मतलब है आपके फुट स्टेप्स मेजर करेगा, whether you've completed 10,000 steps in a day or not. And meteorology means scientific study of Earth's atmosphere. Now, let us move to the next word and see what is the word that we have. The word says Bibli. And Bibli is B for book and B for Bibli, which means book. Now, bibliopole का मतलब क्या है? जो books बेचता है. A bookseller, a bookstore. Bibliophile, love. So it means lover of books. Misobibli. Now, miss का बच्चे मतलब होता है hatred. It's a negative word. मैं आपको डिस्कस कर रही थी कि अगर आपको ये पता है कि नेगेटिव वर्ड्स क्या हैं और पॉजिटिव वर्ड्स क्या हैं, वन हु हेट्स बुक्स. बिब्लियोमैनिया. मैनिया का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव.
when you are obsessed with something. So, extreme fondness for books. बिब्लियोफोबिया, फोबिया क्या होता है बच्चे? फियर, और बिबली मीन्स बुक, क्या हुआ? फियर ऑफ, एक्सट्रीम फियर ऑफ बुक्स. इस तरीके से आपको अगर वर्ड नहीं भी पता तो यू कैन रीड अक्रॉस टू द आंसर and come to what is the vocabulary and what is the answer. Let us move further and see what is the next thing that we have. The next thing that we have, I'm going to discuss some of the synonyms and antonyms of the PYQ and आपको बताने लगी हूँ कैसे आप root words के through कौन से. Every word will not be used with a root word, but जहाँ जहाँ हम root words को use कर सकते हैं वहाँ वहाँ हमारे लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज इतना सारा वोकैबुलरी याद करना is humanly impossible. So let us quickly move across and what is the word that we have, what is the question that we have first. The first question is, there are plenty of graduates anxious for work. Now, anxious को आप root word के साथ नहीं use कर सकते, तो हम अगले question पे चलते हैं. The next question says, the power of the monarchy was circumscribed by the new law. Yes, ये root word से आप relate कर सकते. कैसे relate कर सकते हो? That I am going to explain. Now, circle, circumference, all this becomes your words. So when I am saying circumscribe, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज तो circles में घूम रहे. Now the question says, the power of the monarchy was circumscribed by the new law. तो constraint का मतलब तो हो गया कोई भी चीज को रोकना. तो obviously this is not the answer. Naturalized भी नहीं हो सकता, because circle के लिए बात कर रहे हैं. Circumvented and notified. No. So when we are saying the power of the monarchy was circumscribed by the new law, the answer will be constrained by the new law and not naturalized, circumvented or notified. क्योंकि जब आपके पास नया लॉ आ गया तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मोनार्की की पावर कम हो गई, क्या हुआ? Constrained. So this is how we are getting at the answer. Let us move to the next question and what is the question here? Question is, we caught him eavesdropping outside the window. Again ये word हम root word से उठा सकते. Word है that we are saying eaves and dropping. तो window के बाहर है. सेंटेंस को अगर आप समझ लोगे तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू मूव अक्रॉस. तो वॉन्डरिंग एमलेसली तो बिल्कुल नहीं हो सकता. अगर वो विंडो के बाहर बात सुनता है तो ही विल नॉट बी हियरिंग लाउडली. अगेन दिस इज आउट ऑफ द थिंग. रिफ्लेक्टिंग कामली, अगर वो ईवस्ड्रॉप कर रहा है तो अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर. सो द आंसर इज लिसनिंग. This is what is the answer? Eavesdropping. So that means the word is secretly. Let us quickly move to the next question and see what is the question talking about. The party leader exhorted his members to start preparing for the formation of their government. Now, when we are talking about this, this cannot be used in a root word. So let us move across further. Next question says, the local people are hospitable to strangers. Yes, we can take this word from the word hospitable. Hospitable, जब आप hospital में जाओगे तो आपसे लोग hostile नहीं होंगे. People will be talking to you very polite, calm manner. They will try to make you feel at ease. आप as it is बीमार हो, परेशान हो. So, can the answer be surly? Can the answer be distant? Frosty word आता है frost से, जिसका मतलब snow, frost. Again, what is the elimination? We have come to the answer cordial. Let us move on to the next question.
try and find out what is the question here. Such traditional methods seem incongruous in our technical age. Yes, इस वर्ड को भी हम रूट वर्ड से उठा सकते हैं. इनका मतलब होता है not. I am saying incapable, not capable. I am saying inefficient, not efficient. And congruous का मतलब है when I am saying that anything which is in agreement, consent, congruous. So that means that something which is not congruent. So can the answer be unswerving? No. Can the answer be constant? No. Unwearing or inappropriate? So the answer would be inappropriate and not unwearing. Let us move to the next question. What is the question? Mohan has mercurial temperature. Again, इस word को हम उठा सकते हैं from the word mercury. जब आपके पास थर्मामीटर में मर्क्यूरी होती है, आपका टेम्परेचर कभी ऊपर जाता है, कभी नॉर्मल दिखाता है, कभी बिलो नॉर्मल दिखाता है. तो मर्क्यूरी इज व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग. Can the answer be pleasant? Of course not. Agreeable? Of course not. Merciful? Not. Answer would be volatile. तो आप समझ रहे हो कैसे आपको रूट वर्ड से आंसर्स निकालने. Let us move to the next question. What is the question that we have? It is obligatory for all employees to wear protective clothing. Again, we cannot do this. Let us move across to the next question. Has a genetic predisposition to liver disease. Now, yes, we can come to this question. The word is pre. Pre का मतलब क्या होता है? Before. तो सबको मालूम है. Now, when I say prefix, तब से पहले लगा दो. in लगाया था, dis लगा दो, कुछ लगा दो. When I am saying prepone, तो exams prepone हो गए तो पहले हो गए. From the scheduled date, pre-scheduled, pre-planned, that means before. Predisposition मतलब उसकी disposition पहले से है. Can be the answer resistance? No. Immunity, vulnerability or exemption? Exemption, no. Predisposition, vulnerability. The answer would be vulnerability. Let us move on further and try to figure out what is the next. For a sardonyx, अब ये आप root word से नहीं कर सकते. We will leave it at that. Let us move on to the next one. Next question are where we are talking about the antonyms. Yes, ये वाला word हम root word से कर सकते. Word है the parental support can fortify a child's learning. और ये antonyms के बारे में बात हो रही है. तो fortify जो word है coming from the word. अब fort का मतलब होता है बेटा when we are talking about like a किला. किला है आसपास तो आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको आसपास से कोई भी प्रोटेक्शन देता है. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? He can encourage, brace and strengthen. Strengthen तो उसका सिनोनिम क्या? तो ऑब्वियसली नॉट. ब्रेस भी नहीं, encourage भी नहीं. वर्ड क्या है? कैन है. लेट अस क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? क्या एंटोनिम्स के क्वेश्चन है. नाउ वी कैन हैव अनदर dazzling thought. ये रूट वर्ड से आप नहीं यूज कर सकते तो इसको छोड़ रही हूँ, आगे चल. और आपने देखा कितने सारे क्वेश्चंस आप रूट वर्ड से कर पा रहे हैं. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव? द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द ग्रुप हेल्ड सम clandestine. अगेन ये रूट वर्ड से रिलेटेड नहीं, so I'll leave it out. In the winters the countryside view is bleak. Again this is not related, I'll leave it out. Amid commotion, Peter and his supporters remain passive. Again, I would like to leave out this question. They had the audacity to blame him. Again, they are making plans for the abatement of the nuisance within a specified time. No. Now, there is exponential growth. Now, yes, we can come to this question.
exponential. X is where I'm talking about anything extra, something excessive. क्या हो सकते हैं वर्ड्स जब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रोवर्ट, है ना, एक्स्ट्रा एक्टिव, एक्स्ट्रा करिकुलर. तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई. कैन इट बी ऑगमेंटेड? नो. कैन इट बी रैम्पेंट? नो. एग्रेसिव? नो. सो आंसर वुड बी Nagar growth, राइट. हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई तो बहुत कम ग्रोथ हुई, के लिए हमने क्या किया, M for minimum and M for Niagara. Let us move on to the next question and see वो हमारा होता है या नहीं. हाँ हो जाएगा. Was known for his sagacity. Now when I am saying the word sagacity, sagacity कैसे याद करो, सागा से. सागा वर्ड कहाँ आया, सेज. अब सेंट जो होगा वो जनरली बहुत शांत स्वभाव का होगा. नॉट लाइक टुडेज वी आर टॉकिंग अबाउट बाबा रामदेव. पुराने जमाने में जो हिमालयास पे कैसे से इज ऑलवेज इन वेरी काम बैलेंस. तो वो अपनी सेगैसिटी और सेज के बारे में बहुत नॉलेज होगी. सेज ने इतना अपना विजडम इधर उधर से लिया होगा, वुड बी वेरी नॉलेजेबल, would be very intelligent. तो उसका opposite क्या होना चाहिए? Can the answer be sapience? No. Can the answer be sense? Sense और wisdom synonym है sagacity. Sapien आप सबने बुक पढ़ी होगी of sapiens, where it says human. तो sapiens is obviously no. आंसर क्या गए, ignorance. कोई knowledgeable है और किसी पता आसपास क्या हो रहा है, तो आंसर इज गोइंग टू बी इग्नोरेंट. अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड लेट अस सी व्हाट इट इज. द रिवर गैंजेस कल्मिनेट्स इन द बे ऑफ बंगाल. यस, इस क्वेश्चन को आप रूट वर्ड में क्वेश्चन क्या है, वर्ड है कल्मिनेट. मैं आपको बहुत छोटे छोटे दे रही हूँ, आपको समझ में आना चाहिए. से कंक्लूजन, कंक्लूड, कल्मिनेट. कल्मिनेट का मतलब क्या है, खत्म हो जाती है. बे ऑफ बंगाल में का मतलब क्या है, कंक्लूड. क्लोज नहीं हो सकता, मर्जेस नहीं हो सकता. व्हाट इज द आंसर, ओरिजिनेट. ओरिजिन कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हो, तो आंसर इज गोइंग टू बी ओरिजिन. दिस इज हाउ when you are doing root words, आपने देखा that out of these 10, 15, 20 questions, so many questions have been that are able to get across at more than 40 to 50% of. आपके लिए कितना आसान है अगर आपको रूट वर्ड पता हो और रूट वर्ड का मीनिंग पता हो, चाहे पूरे वर्ड का मीनिंग ना पता हो. तो इस तरीके से इफ यू मूव अक्रॉस, you will be able to learn your vocabulary in a faster and an efficient. I hope this has proved. And just to remind you that our new batches are starting from the 3rd of June. Enroll as soon as possible so that you can not only learn vocabulary but also other things at the CAPF. I hope you have a great day and enjoy yourself, and God bless you all students.